which contains m number of rows and n number. Yes, any doubt or any problem? So this image contains n number of rows, m number of rows and n number of columns, where x and y are the discrete coordinates. Now for notation clarity and convenience, we use integer values for the representation of two coordinates. First coordinate is x and second is y. So let's the discrete coordinates value or integer value for coordinate x starts from 0 to m minus 1, 0, 1, 2 up to m minus 1, and coordinate y starts from 0 to n minus 1, 0, 1, 2 up to n minus 1. So here in our image we have f of xy. It is a function which represents the intensity value, and xy are the discrete coordinate. Okay, so now these discrete coordinates have some integer values, and these values ranges from 0 to m minus 1 for x coordinate and 0 to n minus 1 for y coordinate. Here this m capital represents the number of rows and n represents the number of columns. Now see, for an example, if the value of the digital image at the origin is f of 0, 0, and its value at the next coordinates along the first row is f of 0, 1. So here in this notation, see this 0 and 1, it is used to represent the second sample along the first row, because this 0 represents x coordinate, means first this 0 represents the row, again this 0 represents the row. So in both the cases the row is same, but here 0 and 1, the value of y coordinate is changing from 0 to 1. It means we are moving from column 1 to column 2. It means we are this notation is denoting the second sample along the first row. Okay, the second sample along the first row. Suppose you are moving in the first row from 0 to 0 to m minus 1. Then you may have 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 and so on. It means you are moving or you are taking second sample, third sample, fourth sample along the first row. So it does not mean that these are the values of the physical coordinates. इसका मतलब आपको ये नहीं समझना है कि ये उस coordinate पर values हैं. No, these two x value and y value only represents the coordinate value. Okay. Now, in general, the values of a digital image at any coordinate xy is denoted by this function f of xy. So clear this point. If you are writing f of 0, y, it means 0 and y, 0 and 1, 0, 1 will represent the coordinate value. Okay. Whereas this complete f of xy, or we can say this f of x, y, the value at x, y will represent the value of or we can say the intensity level at these coordinate or at these pair of coordinates. So when we need to refer to the specific coordinates ij, we use the notation f of ij. So in some other cases, we can take in place of I in place of x, and we can take j in place of y. Okay. So you can use I and j in place of x and y. There is no difference. So the section of the real plane spanned by the coordinates of an image is called a spatial domain. Remember this point, section of the real plane spanned by the coordinates of an image is called the spatial domain, with x and y being referred to the spatial variables or spatial coordinates. So see, this is the figure, or this is the diagram. This diagram shows that image plotted as a surface here, this first one. Now see second, this is the second diagram. Here this image displayed as a visual intensity array. Now you can see
for f of x from 0 to whatever be the value, and from y from 0 to whatever be the value, you have some value for f of xy. Here this value is dark gray and white, so we can say it has three values. Okay, three values, maybe 0 for black and 1 for white, and this 0.5 for the other set between the 0 and 1. Okay, and this is the representation. So see figure this, it is a plot of the function with two axes determining the spatial location and the third axis being the values of a function. Okay, so this is the first plot. It is a plot of the function f of xy. Here you can see this x is the one coordinate, this y is the another coordinate, and this f of xy, it is a function. Okay, it is the function. So we are getting some spatial location at the third location being the values of f as a function of x and y. Okay. Now this representation is useful when working with the grayscale sets whose elements are expressed as a triplets of the form x, y, z. So here these x and y are the special coordinates, and z is the value of f at coordinates x and y. So this diagram represents, suppose x is this and y is this. So you are taking a pair of x, y, suppose here, then you will get the corresponding value of f of x, y. Now this is the another figure B of this representing digital image. This representation is more common. As you can see, we always see this type of representation in our monitor or in our TV. Okay, because or we can say on our books, pages of on our books. This is the representation in 2D. So it shows f of xy as it would appear on the computer display or photographs as explained. The intensity of each point in the display is proportional to the value of f at that point. किसी भी point पर यदि आप देखेंगे तो उसकी corresponding जो भी intensity है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है. So in this figure there are only three equally spaced intensity values. Now these intensity values are normalized to 0 and 1. Okay, then each point in the image has values 0, it will reflect the black color, 0.1, 0.5, it will reflect this gray color, and this 1, it represents this white color only. So a monitor, or we can say a printer, converts these three values to black, gray, or white respectively as shown in this figure. This type of representation includes color images and allows us to view results at a glance. Now another, the part C of the figure shows the representation in an array, or we can say in matrix form. It is composed of values f of x, y. Now this matrix or array, it is composed of the value f of x, y. F of x, y. Okay, at x and y position. This is the position. Suppose this is the position where you are getting 0 value. Okay, now this is the position where you are getting value. So I will explain using whiteboard what 0 and what is the position, okay, of the coordinates. So this is the representation used for the computer processing. Equation form, we can write the representation of an m by n numerical array as in this fashion. Okay, so this f of xy is equal to, this is the representation in the matrix form, or we can say in the array form. Here you can see f of 0, 0 means the value of coordinate x is 0 and the value of coordinate y is also 0 here. Okay, similarly, this is the, in the first row, it is the column number second, f of 0, y. So this will reflect the level of intensity or value of the intensity at coordinate value 0 and y, means x is 0 and y is 1. Similarly, you can find the value in the same row
at x equal to 0 and n minus 1. This n minus 1 represents the column value. कौन से column में है? Similarly, you can see if you are moving from top to bottom, then you are increasing the row 0 to 1 to m minus 1 and keeping the column 0 means constant. So in this way, you are moving from left to right in the row in the columns and moving from top to bottom in the rows. Okay, to calculate the value of f of x y for different spatial coordinate values x and y. So the right side of this equation is a digital image representation. Okay, and each element of this array is called the image element, picture element or pixel or tel. So इस array का इस element को आप बोलेंगे image element, picture element or pixel value. Whatever be the value you will see, I think you can remind it from the digital image processing lab. I have shown the after loading the image in the MATLAB. Okay, after clicking the loaded image in the workspace, then what we obtain the values in the Excel. Okay, in this way. So we will use the term image or we can say pixel throughout the presentation in the semester. Now this is the graphical representation in which you can see coordinate conversion used to represent the digital image. Because coordinate values are integer, there is one-to-one correspondence value x and y and the rows R and column C of the matrix. So here you can see this is the origin 0, 0 and you are moving from 0 to n minus 1, it represents y, and here 0 to n minus 1, it represents the x. So this is the row and these are the columns. Now here you can see this pixel f of ij means at value I may be 3 and j may be 2. So at value 2 and 3 you will get some value. This is the value or known as the pixel or known as the image element. Okay, now you can also see the center of this array here. The center you can calculate using this condition, floor m by 2, comma n by 2. Number of rows, it may be divided by 2, and number of columns, जो भी है divided by 2. So here, this graphical representation of an image array where x and y axes are used to denote the rows and column of the array here. So specific pixels are values of the array at a fixed pair of coordinates. You can see the pixel values, okay, here at a fixed pair of coordinates. Now, generally we use f of ij when referring to a pixel with coordinates I or j. So this is another representation of the traditional matrix form. Here E is equal to, you can replace the earlier one, this, okay, this, by this A00, A01, A02, n minus 1. Similarly, on moving from top to bottom, a m minus 1 to 0 up to a m minus 1 comma n minus 1. So here this aij, it is f of ij. So the equation we can replace. Now this is the, if we are taking matrix में ये अलग हो जाएगा आपका 0 0 origin ना होकर वो आपका होगा 1 1. So up to here किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? So we define the origin of an image at the top left corner. So this is the convention based on the fact that many images display TV monitors sweeps an image starting at the top left and moving to the right one at a time. आपने देखा होगा हम यहाँ से मूव करते हैं लेफ्ट से राइट, ओके, और कहाँ तक जाते हैं यहाँ पर राइट साइड में बॉटम तक मूव करते हैं. So this is the convention which we use. So the more important is the fact that the first element of a matrix is by convention at the top left of the array. So choosing the origin of f of xy at that point makes sense mathematically because digital images in reality are matrix. So in fact, you will see sometimes we use x and y interchangeably in the equations. Okay. Now here this rows R and column C of the matrix. So up to here, if any student have any type of doubt, then please you may ask.
क्लियर है? हेलो, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। यदि किसी को डाउट है तो मैं एक बार और आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, सिंपल से तरीके से। Actually, what is our title? Representing digital images. Representing digital images or representation of digital images. Okay. Is that clear? So, जिसको क्लियर नहीं हुआ होगा वो अभी समझ लें इस चीज को, है ना। वो डाउट होगा तो मेरे से प्लीज पूछ जरूर लें, क्योंकि डाउट होने पर यदि नहीं पूछेंगे तो आप ही का लॉस होगा। Is it visible? I have. Yes sir. Okay. Now see in this diagram, we know that we have x and y are our coordinates. Okay. We have, these are the coordinates, this x and this y. Okay, this is the coordinate and this is also another coordinate. Now this f of x comma y gives the value at x and y. Is that clear? So this is the value. Is that clear? Yes sir. Now here you can see this complete is the okay. I am skipping this. I am drawing here. Okay, so this diagram is the image plot as a surface. We have plotted the image as a surface, है ना? So this function give us in this fashion. X represents the coordinate, y again represents the coordinate, and at pair of x y we have some f of x y position here. Okay, some position here and the corresponding value. Now see in this diagram. In this diagram, this is the x. Now here we are moving downwards. Okay, so you can write it downward. We are moving downward. From where? From where? It is the origin. This origin is always positive. It will be positive x and it will be positive y in both the directions. And here we are moving from left to right. And here we are moving from top to bottom. Okay. Now this value may have any value from 0 to m minus 1 and from 0 to n minus 1. Okay, is that clear? This is the representation. Okay, this is the image displayed as a visual intensity array. Now at value x and at value y, suppose at this point, this is the value of x and this is the value of y. So at the pair x y, suppose इसकी वैल्यू x की आपने एग्जांपल में समझने के लिए क्या ले ली है, इसकी वैल्यू आपने 9 और ये वैल्यू आपने ले ली है सपोज इट इज 10. So at 9 10, this is the pair f of x y. You are getting the value f of 9 and 10. It is equals to what? It is equals to what? It may be any value. Suppose it is white, oh sorry, gray, so it is 0.5. It is 0.5 here. Okay, so this is the position. This will give the position, and these are the special coordinates. Spatial coordinate x y, and this function with value 9 and 10 here will give the position, and at what position? This is the position. This is the position. How will you find the position?
simply suppose x you have taken 7 and y you have taken 11. It means at x is equal to 7 and y is equal to 11. This is what this represents the position. This represents the this will give the information of the position. Is that clear? Position in the array. Position in the array, or we can say or in the image. The image किस पोजीशन पे. अब नाउ थर्ड थिंग इज दैट पहला पॉइंट आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स, दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा पोजीशन, और थर्ड पॉइंट हो जाएगा इस पोजीशन पे वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ पिक्सल. पिक्सल वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी 0.5 फॉर दिस एग्जाम्पल. सपोज आई एम टेकिंग दिस पॉइंट. क्लियरली दिखाई दे रहा है भाई आप लोगों को? चलो. Yes, sir. Yes, sir. Suppose I have taken this, for this case x it is equals to suppose 25, or y it is equals to suppose 30. Okay, so the pair क्या रहेगा आपका पेयर 25, 30. ओके, ये तो आपका रहेगा पेयर कोऑर्डिनेट्स का. कोऑर्डिनेट पेयर वी कैन से सिंपली दीज आर द कोऑर्डिनेट्स. ओके, नाउ पोजीशन की बात करेंगे आप, तो पोजीशन क्या होगी आपकी? पोजीशन आपको ये यहाँ से पता चलेगा, ये दिस इज द पोजीशन. ओके, बाय यूजिंग दिस. वैल्यू क्या रहेगी आपकी यहाँ पर? वैल्यू की बात करेंगे आप, वैल्यू क्या रहेगी आपकी यहाँ पर? बिकॉज वी नो दैट हियर दिस इज ब्लैक, सो हियर राइट सिंपल black it is 0, gray means it is equal to 0.5 here only, because here three types of color is visible here, and white means it is equals to 1. Is that clear? So value क्या रहेगी आपकी 1. Yes, clear है? Yes, sir. है ना? इसी चीज को मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने अभी बोला था बताऊंगा. सपोज यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, you are moving from diagram, you are moving from left to right, okay, and here from top to bottom. Now take this value, okay, take this value. So what is this? What is x here and what is y here? Yes, any student from the class, please give the answer. Please. Any One. student in the, yes? One. Yes, very good. It is 1. It is 1. It is 1 and it is also 1. So what is the position? X is equals to 1 and y is equal to 1. But at this position, what is the value of pixel? Value of pixel क्या होगी आपकी? It is 0. Because whatever is written, these are the values of the pixels. Okay, for corresponding values of coordinates x and y. So it is 0 already given. Now take another example, this one. So see, because there they have dash dot, so it may you may take any value. Okay, you may take any value. So suppose x and y, these are some other values. Say for this point, suppose you take just 20 and 25. So for this, what is the value? It is 0.5. Now third one, this is the case. So take this, for this case, coordinate may be 200 and it is 225. So what is the value here? 1. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Okay, I am taking this bigger diagram so that you can understand many information. Okay, now see in the same diagram. This is suppose this is the origin. This represent what? This is our origin. This 0, 0, it is our origin. Okay. So the value for origin will be 0, 0. So इसको आप क्या बोलेंगे? It is our first sample. Yes, it is our first sample. Now say this one. What is this? The coordinate value is x is 0 and y is 1. So what is this? It is second sample. This second sample. हमने क्या किया है? आपका जो x कोऑर्डिनेट है उसको आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. क्या किया है आपने? उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to m-1. So this is what? This is the discretization of the x coordinate. Okay, means discretization. सैम्पलिंग कर रहे हैं हम, सैम्पलिंग की है हमने इसकी. तो ये क्या देगा हमारी फर्स्ट सैंपल की वैल्यू? ये क्या देगा हमारा सेकंड सैंपल? ये क्या देगा हमारा थर्ड सैंपल? इज दैट क्लियर और नॉट? m-1 सैंपल. हेलो, Yes, sir. हमने क्या किया है? आपका जो x कोऑर्डिनेट है ना उसके इक्वल डिवीजन कर लिए हैं और ईच डिवीजन और वी कैन से ईच this segment part is equally spaced. The distance between these all the parts is equal. Okay, ये d है यदि आपका तो ये भी d है, ये भी d है तो ये भी d है. Is that clear? Similarly, for the y we have Yes, do sir. the same. Okay. So what I am going to explain here. This, so as I move from left to right, so what here means we are taking different samples in the this direction. Okay, in this direction only. Is that clear? आपका इसमें रो तो सेम है. Yes. इस कंडीशन में आपने देखा होगा रो क्या है आपका सेम है, लेकिन कॉलम क्या हो रहा है आपका? आप पहले कॉलम से दूसरे कॉलम में मूव हो रहे हैं इस तरीके से. सो आपका कॉलम क्या हो रहा है यहाँ पर? आपका कॉलम हो रहा है आपका चेंज हो रहा है. ठीक है. सो अब बात करेंगे हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम इसकी बात करते हैं. f ऑफ 0,1 यदि आप लेते हैं सो ये क्या देगा? हमारी वैल्यू देगा. किस पर देगा? किस पर देगा? किस पर देगा? एट सेकेंड सैंपल. Okay, at second sample. So what will be the value at this point? What is the value at this point? It is 0. 0. It is 0. So I think is that clear? So we have what? X and y are the coordinates. So x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 to m-1. y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 to n-1. यदि हम रो और कॉलम की बात करें तो पहली चीज. दूसरी चीज हमको जो मालूम होना चाहिए वो ये है कि ये किस पोजीशन पे है ना, या किस सैंपल की बात कर रहे हैं. हमको ये पोजीशन भी मालूम होना चाहिए. स्पेशल कोऑर्डिनेट्स जो हमारा प्लान बन रहा है, स्पेशल प्लान में हमारा वो पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पे पॉइंट वाई. आप बोल रहे हैं कि सर 0 वैल्यू है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटा किस पोजीशन पे इसकी वैल्यू है? एट व्हाट पोजीशन इन द स्पेशल प्लान. So you can calculate by seeing this only. Okay, this represents the first row and this represents the second column. Now इसी तरीके से आप यहाँ पर मूव करेंगे तो आपके पास में क्या होगा? 0,256. ओके, यदि आप 256 m और n की वैल्यू लेते हैं तो
यदि आप इसकी वैल्यू 0 से 256 लेते हैं और यहाँ पर 0 से 256 लेते हैं उस कंडीशन में, ठीक है, तो ये वाला जो रहेगा लास्ट वाला, इट विल बी दिस वन. नाउ सी this 0.1 in this figure, it represents the gray value. It represents the gray value, and this 1 in this diagram represents the white value, and the remaining 0, this value represents, oh sorry, okay, this 0 will represent the what? Black value. Okay. Is that clear? Yes, sir. So we can say that at every xy, at every x comma y, we have some values of f of xy, f of x comma y. These are the values, okay, or this will represent the position. So I think it is clear to all of you. Still, if any student have any type of doubt, then please you may ask. Yes, कोई doubt है? No doubt. Now this I have taken again. This is the representation of m cross n numerical arrays. Okay, this is the array of m cross n. This is the array of m cross n. Now this f of x y, suppose this is the 0 0 0 1 0 and minus 1. So first you have taken this m, it is equals to m, मैंने आपको बताया था 0 to these are the integer values 0 comma 1 comma 2 up to this one. Right here it is x. Okay. Now the value of x, it is 0 comma 1 comma 2 up to m minus 1. और m क्या होगा यहाँ पर आपका रो. Is that clear? Similarly, y have integer value ranging from 0 to n minus 1, 0, 1 comma 2 up to capital N minus 1, and here it will represent the column. Okay, so this is the first column, this is the second column, and this is the n minus 1 column. Is that clear? This is the first row, this is the second row, and this is the what? N minus 1 row. Is that clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the case when x is equal to 0 and y it is equals to 0. इसका मतलब ये है कि we are in first row and first column. Okay, first row and first column, and the value at this point, it may be 0, it may be 0.5, it may be 0.7, or it may be 1. It depends on the image which you are going to view. आप जिस इमेज को देख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा. सिमिलरली यदि आप इसकी बात करें तो ये क्या है आपका फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम. सो स्पेशल पोजीशन क्या रहेगी आपकी, ये रहेगी. इट विल दिस गिव्स द स्पेशल पोजीशन, एंड दिस f ऑफ 0, y पर जो भी आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी द पिक्सल वैल्यू. पिक्सल की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पे. तो पहला तो कोऑर्डिनेट की वैल्यू, दूसरा पोजीशन इन द मैट्रिक्स, तीसरा उसकी वैल्यू. दीज 3 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. सो आप इस तरीके से मूव करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, सपोज यू हैव टेकन 256 बाय 256 का मैट्रिक्स लिया है. इसका मतलब ये है कि आपके टोटल रो कितनी रहेंगी और कॉलम कितने रहेंगे, ये रहेंगे. तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे करेंगे. ठीक है,
सो इसका मतलब है कि यदि आप इस पोजीशन पे आते हैं, लास्ट वाली पोजीशन पे आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 256 बाय 256, ठीक। और ये कह सकते हैं कि लास्ट रो और लास्ट कॉलम, इस लास्ट रो और लास्ट कॉलम पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो जो भी होगी वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। So this is the complete information, or we can, this is the representation of the array in terms of it. Now here these all elements are known as what? क्या कहते हैं इन एलिमेंट्स को? क्या कहते हैं भाई? इमेज एलिमेंट्स पहली क्लास में ही बताया मैंने। और क्या कह सकते हैं इनको? पिक्चर एलिमेंट कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं इनको? पिक्चर, पिक्सल। और क्या कह सकते हैं इनको? PEN, pen. So this is the commonly used term. What? Pixel. So we will use this term throughout the session, throughout the semester. Okay. Now I have also shown in the PPT that you can also represent this in terms of this. This is the traditional matrix form. Okay, you can see here. Is it visible? I have said completely desktop or only PPT. Is it visible? Yes, Students? Yes, sir. Okay, so you can also represent the earlier one by a 0, 0, 0, 1, 0, 2, n minus 1. In this way, you can write up to a m minus 1, n minus 1. I am skipping this. Is that clear? अब किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये फॉन्ट साइज विजिबल है, इसको और बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है। So their first terminology which you have to remember, that is the RHCCS. ये क्या होता है? RHCCS. Okay. It is right-handed standard right-handed Cartesian coordinate system. What is this? Anybody student in the class? Any student in the class? Can you tell me about this? Yes, any student? Abhishek? Shivanshu? Abhishek Anand, yes. Do you know yes, this sir. Standard right-handed Cartesian coordinate system? आपने कभी टीवी देखा है या आपका मॉनिटर देखा है? Yes, sir. मॉनिटर में यदि कोई इमेज रहती है तो उसमें आप किस सिस्टम को फॉलो करते हैं? Both. नो। यस, एनी अनदर स्टूडेंट? अभी मैंने आपको बताया था टॉप लेफ्ट टू राइट वन रो एट द टाइम, फ्रॉम टॉप लेफ्ट and moving to the right one.
आपने देखा होगा ना इस तरीके से, सपोज आपके पास में मॉनिटर है, तो आप कहाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एंड कहाँ होता है आपका यहाँ। तो इसका मतलब ये क्या है, आप लेफ्ट टू राइट, 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 टॉप टू बॉटम। Is that clear? Yes. So this is the system, स्टैंडर्ड सिस्टम है जो हम यूज करते हैं। दिस इज द राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि आप यहाँ जो आपका टॉप है, जो भी आपका टॉप है, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मूव होते हैं राइट साइड में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होते हैं, और दूसरा फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। ओके, Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. सब समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि मैं यानी डायग्राम लिया, इसको बता देता हूँ, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, number of rows, it contains number of rows, first row xc, this is the average, and this is the m minus 1 row. Okay, this represents the row. So हम यहाँ पर क्या हो रहा है, मूव कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, और ये आपके फर्स्ट टू सेकंड थर्ड अप टू n minus 1, ये आपके क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम। दिस इज योर सेकंड कॉलम। नाउ सी एट एनी value at x is equal to maybe I and y is equal to maybe j. So suppose x it is equals to I, y it is equals to j. At any value, at say at x is equals to I and y is equal to j. Okay, this is the value. So here you will have I comma j, the value of this f of x or image at x एंड जे, एक्स और जे की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो वहां पर जो भी आपकी वैल्यू आएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज द पिक्सल, पिक्सल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर दिस इज द पिक्सल वैल्यू। तो इन दीज करस्पॉन्डिंग आर द स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, एंड दिस कंप्लीट मेक अ स्पेशल प्लान, स्पेशल प्लान with the help of these special coordinates, and this complete give the image f of x comma y. Now this is the center of the image, which you can calculate taking xc comma by c. This c represents for the center. Floor m by 2, floor n by 2. Coordinates of the image center are calculated using this equation. Now one more thing which I want to share here is that expressing sample and quantization, it is more formal mathematical terms, and it can be useful at time. Suppose if we are taking some another parameter, let z and r to be another parameter, and these denotes the set of integers and the set of real numbers. This represents the set of integers, and this is the set of real numbers. Okay. So the sampling process may be viewed as partition in the x y plane into a grid. So see here, what is sampling? Sampling क्या करेगा, जो भी आपका x y plane है, x y plane है, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया, this is the x y plane, this complete, this is the x y plane. So what the sampling process does? The sampling process make a
make partition of this XY plane into grid. Okay, into grid with the coordinates of the center of each cell in the grid being a pair of elements from the Cartesian products of this Z square. So I think, are you getting when I am saying it divides the XY plane into a grid? So any student, can you explain grid? आप देखा होगा ना, आप जब कोई भी फिगर प्लॉट करते हैं तो ग्रिड ऑन मीन्स दिखाई दे रहा है आपको ये? Yes. Yes, sir. So these are the sampled on one axis and take sample on another axis. So ये क्या आपका बन जाएगा, आपका ये जो एक्स वाई प्लेन था ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आपका, ये ग्रिड में कन्वर्ट हो गया. Yes. Yes, sir. Yes. If your XY plane is converted into grid by what? Sampling. Sampling. Okay, is that clear? We have XY plane and we have applied the process of sampling and that sampling has converted a grid. अब आप यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही होगी. What is this? This is triple one. You can see one diagram which I have shown you here. This is what. Okay. समझ में आया कुछ आपको? यहाँ पर आपने उसको अरे में जैसे आपने बताया ना, suppose this is 1 2 3 4 5 6 7 and up to here. This is the row and this is the column. So here these are the small cells or small boxes. Okay. So here just suppose this is the Z square. So I have explained the sampling process may be viewed as the partition of the XY plane into a grid with the coordinates of the center of each cell in the grid, and it is a pair of elements from the Cartesian product of Z square. So you will see here Z square here. This is the XY complete plane, and this is from grid. Okay, and the value of this is Z square, calculated by Z square, which is the set of all ordered pair of the elements Zi, and Zj. आप यहाँ से लेंगे ये Zi and Zj, where this Zi and Zj being integers from Z. These are the two integers which we have taken from this Z. So we can say that f of x comma y, it is a digital image if x y are the integers from the Z square. Okay, हम कह सकते हैं कि कोई इमेज f of x comma y आपकी क्या होगी, इमेज होगी यदि इसके जो एलिमेंट्स है वो Z स्क्वायर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, या Z स्क्वायर से लिए गए हैं. एंड f is a function that assign a intensity value, okay, that is a real number from the set of all real values of this R. Okay, और जो आपका f है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका सेट ऑफ वैल्यूज. सेट ऑफ वैल्यूज रहेंगी जो कि कहाँ से बिलोंग करेंगी, वो आपकी R से. दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स. ओके, सो सपोज यहाँ पर आपकी कोई वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करेगी 1 रिप्रेजेंट करेगी, या आप जब मैट्रिक्स लेते हैं उसमें 0 to 255 का लेते हैं तो यहाँ पर हो सकता है 125 हो, या कोई भी वैल्यू हो सकती है ना. और आपने सेट करके रखा हुआ है, सपोज आपने 256 बाय 256 का इमेज लिया है, इसका मतलब है कि यदि कोई वैल्यू यहाँ पर किसी की 270 आती है तो वो इसको इग्नोर कर देगा. क्या कर देगा इसको, वो चलो इग्नोर कर देगा. इट विल टेक ओनली वैल्यूज लेस देन 256.
Okay. Hello. Yes, sir. Okay. Yes. So this functional assignment is the quantization process. Okay, this is the functional assignment. It is the quantization process. Now see here one more thing, that is the digitization process. It requires the decision be made regarding the values of m and n. अब हम बात करेंगे digitization की m और n के लिए. So we have values m or n, and for the number L, I am introducing one more letter, that is L, and this L represents the number of level or discrete, or we can say discrete intensity level. Intensity level. Okay, these are the discrete intensity level. Okay, इस चीज को हम क्लियर कैसे करेंगे? जैसे आपने ये उसमें पढ़ा होगा कि यदि आपकी नंबर ऑफ बिट्स यदि 2 होती है तो 2 दी पावर 2 करते हैं तो क्या आता है आपका 4. तो ये 4 जो रहता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? हेलो हेलो, दिस रिप्रेजेंट द लेवल. आपने डिजिटल अकाउंट में ही पढ़ा होगा डिस्क्रीट लेवल्स. यदि आप यहाँ पर b की वैल्यू यदि आप 3 लेते हैं, नंबर ऑफ बिट्स 2 दी पावर 3, यहाँ पर क्या होता है 8. दीज आर द नंबर ऑफ इंटेंसिटी लेवल्स. These are the number of intensity levels. Is that clear? Yes, sir. Yes. Okay. So these must be positive integers. Okay. Now, what is the requirement of this? Because due to storage and quantization, hardware considering the number of intensity levels. Okay. Typically is an integer and these are power of 2. अभी हमने इमेज पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे बिकॉज कंप्यूटर स्टोर जो भी करता है वो बाइनरी इंफॉर्मेशन की फॉर्म में करता है ना. सो अब यहाँ पर आप एक टर्म देखेंगे, दिस इज एल, इट इज इक्वल टू द पावर के. नाउ के क्या है, एल क्या है, ये अगली क्लास में आपको कवर करूंगा. ठीक है. इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपके पास में जो भी है उसको आप नंबर ऑफ लेवल्स में डिवाइड कर लेते हैं. सपोज ये आपका 1 है, 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना. इसको हटा देते हैं है ना. कैसे रबर रीडर. चलिए इसको आप इग्नोर कर दीजिए यहाँ पर. ठीक है. तो ये 1 2 3 4. ठीक है. तो यहाँ भी साफ हो गया था. ये आपने इसको लेवल में डिवाइड कर दिया है. सो दीज आर द कैपिटल एल. दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एल. जितने भी आपके लेवल्स रहेंगे क्या होगा नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं प्लीज. हेलो. Yes, sir. If any student have any doubt, then please you may ask, because this is the basic and important part. Okay, so I am showing what I have covered today. So this is the representation of the digital image. These include 3 diagrams. Okay, this is the important thing is that we have x, we have y. These are the coordinates, spatial coordinates, and the pair of x and y. If the position at which we will find the value of pixel. Okay, so this I have covered it. Now this is the representation of image in terms of array having m and n number of rows and number of columns. Okay, now here we follow right-handed Cartesian coordinate system as in case of TV or as in case of monitor. Okay, or we can say in case of your image which you have printed on your page. Now this is the way by which you can understand the movement of the picture. I will explain it in the upcoming image processing lab. Okay, now next thing is what we are doing. We are making the complete x by plane in or converting the x by plane in terms of grid.
ओके, यही ग्रिड हम आपको बताएंगे जब हम इसको एनलार्ज करते हैं तो वो उसमें आपने देखा होगा वो फैल जाती है, और जब हम इसको मिनिमाइज करते हैं तो वो क्लियर दिखती है। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू कन्वे यू? आपने एक इमेज देखी होगी जो आपने आज से 5 साल पहले मोबाइल में कैप्चर की है। उस इमेज को यदि आप जूम करते हैं, ओके, देन यू कैन सी these cells, okay, these are the grid। और इस ग्रिड में आप देखेंगे आपकी ही कलर्ड फोटो आप देखना 5 साल पहले की, यहाँ पर हो सकता है कि वो ब्लू ज्यादा दिख रहा हो, यहाँ पर डार्क ज्यादा दिख रहा हो, यहाँ पर कुछ अलग तरीके का दिख रहा हो, जो कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं। दिखाई दे रहा है आपको ये वाला डायग्राम? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. है ना? इसको जब हम जूम करेंगे, इसको एनलार्ज करेंगे, तो यू विल बी एबल टू सी दिस इन टर्म्स ऑफ दिस स्मॉल स्क्वायर, okay, these small square। So today I have also covered it। Now the important thing which I will cover in next class, the intensity levels। यदि आपकी इमेज का साइज m/n है, 256 है, तो आपकी कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी स्टोर करने के लिए? ओके, सो इफ यू वांट टू टेक स्नैपशॉट देन यू कैन टेक, है ना? Otherwise, I will post this complete PPT. It has 192 slides right now. I will share after completing this chapter। Any student, again, I am asking, have any doubt, then please you may ask। It is very important thing। Hello? नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि आप जब इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं और कम करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या आता है, या दूसरा जब आप इंटेंसिटी के लेवल को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या आता है, जिसको हम बोलेंगे आपकी भाषा में पिक्सल। 2 मेगापिक्सल का कैमरा है तो इमेज कैसी आएगी, 32 मेगापिक्सल का कैमरा है तो इमेज कैसी आएगी। एंड आई विल कवर इट विद द हेल्प ऑफ लैब आल्सो, यूजिंग योर इमेज। यू कैन टेक योर इमेज आल्सो टू सी द इफेक्ट after increasing or decreasing the two things, okay, resolution and intensity। Yes, without any student? No, sir. अभिषेक कुमार, बेटा समझ में आया कि नहीं अभी तक, ये बताओ आप। Yes, sir. समझ में आ रहा है सब कुछ? Yes, sir. Okay, so I have downloaded the attendance। Now you may leave the class। इस बार जो लैब Thank you, होगी, sir. हाँ थैंक यू बेटा, इस बार जो लैब होगी उस लैब को कोई भी स्टूडेंट मिस ना करें, because I will give you experiment number 5th, but for that I will also explain the effect of reducing or increasing or decreasing the effect of quantization level। okay, आप देख सकते हैं उसका इफेक्ट क्या आएगा। Thank you, sir।